Hello and welcome to SmallCap Spotlight. I'm Richa Jain. In focus today is EPW India Limited. Joining us today is Mr. Yusuf Uddin, Managing Director of EPW India Limited, who we will hear more from on the company's journey and growth plans. Thank you for joining us today, Mr. Yusuf. To begin with, क्या आप हमें थोड़ा सा EPW India Limited की जर्नी के बारे में बता सकते हैं? आपके की माइलस्टोन्स क्या रहे हैं जिनने कंपनी की ग्रोथ को शेप किया है राइट फ्रॉम इंसेप्शन टू वेयर यू आर टुडे? So hello everyone, my name is Mohammad Yusuf Uddin, founder and director of EPW India Limited. My entrepreneur journey began in 2008 when I was just 23 years old. I started journey with the selling of small component like computer and peripherals. It was that brand new that time. So after 6 to 8 months, we have started with the brand refurbished product like laptop, desktop, and all-in-one PCs. So it's started from my advisor with one of my friend given me to start for refurbishment units. So now today we are working for the large scale in refurbishment unit. So we are in Telangana authorized refurbisher and authorized recycler also. So now today we have been selling IT products from last 17 years. We have experience in this industry. So in the last year in 2024, we took over one company like Renovat Recycling India Private Limited. That is main source for the procuring e-waste IT goods from the companies. That's lovely to hear, sir. आपने थोड़ा सा अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताया, थोड़ा सा और बताइए क्या चीज ने मोटिवेट किया to you to enter this space? What experiences helped you reach your current seniority leadership role at EPW? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ at the time of college period I had joined one company as a junior accountant as I have a background with accounts as in the college period like a junior accountant as I work from 2003 to 2008. Then I have started my journey with a small amount of rupees 50,000 only. So it was a very small amount at the time of in 2008. But I have taken some hand loan amount with my brother-in-law also. Then I have started my journey to start our company. So ये बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है. थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस. जैसा कि हम जानते हैं, हर ग्रोइंग कंपनी बहुत सारे चैलेंजेस, हर्डल्स फेस करती है. तो EPW की जर्नी में वो सबसे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस कौन से थे? ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, मार्केट रिलेटेड, और आपने उन्हें कैसे नेविगेट किया? देखिए हर कंपनी में तो चैलेंजेस आते हैं, ये तो नेचुरली है. जब एक कंपनी ग्रो करती है तो फाइनेंशियली एंड सोर्सिंग वाइज भी इनको सारे चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है. लेकिन EPW इंडिया और मैंने जिस तरह से इसको हैंडल किया है, एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू हमने इसको हैंडल किया है. जस्ट मैं आपको बात करूं, अगर इन 2008 टू 2011 इट वाज द वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर EPW इंडिया. And when my brother and my father also joined in 2012 with my journey, so it was the great time for us. So हमने इसको slowly grow किया है with the family members and हमने इसको extend किया है. Lovely, sir. So EPW ऑपरेट करता है रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और रिवर्स सप्लाई चेन इकोसिस्टम सेक्टर्स में, जो कि ग्लोबली भी बहुत रेलेवेंस पा रहे हैं ये सेक्टर्स. तो आप हाउ डू यू व्यू दिस इंडस्ट्री इन इंडिया टुडे? आपको क्या लगता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स क्या स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स आ सकते हैं इन सेक्टर्स में इन इंडिया? देखिए that is true. In India in 2024 it was around the market 56,008 crore rupees what was the valuation in refurbished market. So every year it's going about 7 to 8% increasing in India also, all the refurbished IT assets market. So EPW is also planning to go together with the as the market is growing in the market in India, and globalized also is a very high demand for the refurbished IT assets. And as you are planning to grow, differentiates EPW's refurbishment resale model from others in the market. आप कैसे इंश्योर करते हैं क्वालिटी कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट, जो कि काफी क्रिटिकल होते हैं इस सेक्टर में? यस श्योर. इसके लिए हमारी टेक्निकल टीम बहुत साउंड है, and we have good sourcing from our suppliers also, and we have a refurbishment complete unit with the facility of machineries, and we have good skill in technicians also we have. So now after IPO we are planning to expand our this facility also. So now we are having 500 metric ton capacity in EPW India only. So our subsidiary company is about to get the license for 4,000 metric ton.
for refurbishment only, and for recycling 15,000 metric ton will be get the license in soon. ओके सर, दोस आर बिग नंबर्स। आईपीओ Yeah. जर्नी के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले आप थोड़ी सी इंसाइट्स शेयर कर सकते हैं हमारे साथ बी टू बी और बी टू सी कस्टमर सेगमेंट्स के मिक्स के बारे में। आपको क्या लगता है कौन सा सेगमेंट ज्यादा ग्रोथ ड्राइव कर रहा है, और आप क्या सोचते हैं कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये मिक्स ऑफ बी टू सी कैसे इवॉल्व करेगा? जी, ये भी बात करेक्ट है आप जो पूछ रहे हैं। वी आर engaged with the B2B sector from the last 2008. So we have around 55 to 60% customer base we have made in B2B sector only. So nowadays we are planning to extend our journey with the B2C also, as we have already in 45%. So in another year we will change up to 70 to 80% for B2C sector only. आपका बिजनेस हेविली डिपेंड करता है सोर्सिंग यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। तो आपके what are your key inputs and raw materials? How do you manage pricing fluctuations, availability, supply chain dynamics? ये सब आपके मार्जिन्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, और आप कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं सोर्सिंग रिलायबिलिटी एट स्केल? देखिए, इसमें हमारा जो सोर्स है ना, वी आर मोस्ट एंगेज विद द आईटी सेक्टर कंपनीज. सो वी आर प्रोक्यूरिंग फ्रॉम द ऑल आईटी एसेट्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम द ऑल गवर्नमेंट सेक्टर, एमएसएमईज, and this IT sector also. We have good sourcing and we have good vendors to supply chain properly in our line. And the next thing is how we are managing our accessories product. So we have our own source. We are importing from all accessories like RAM, SSDs, and other component from China and USA also. So what is the price fluctuation? If we can see, if it can normal, if anybody wants to buy any product like accessories from the local market, if we are importing from other countries, that is the main beneficiary for EPW to get margin good. कोई केपेक्स प्लान्स लाइंड अप हैं रिफर्बिशमेंट कैपेसिटी में, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, या फिर इवन न्यू फैसिलिटीज में? और कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं या ज्योग्राफीज हैं जहां पे आप सोच रहे हैं एक्सपैंड करने का? जी हाँ, उसके लिए प्लान है हमारा. एज वी हैव बीन एंगेज विद द लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड एक्सेसरीज. So now in future we are adding our other products also, home appliances like fridge, washing machine, and air coolers also. We are going to start refurbishing in our subsidiary company. अच्छा, एंड अब हम आते हैं जो कि आपने पहले भी टच किया था, EPW is now entering the public markets. So what are the key reasons behind deciding to go for an IPO at this stage of the company's journey? This is the main reason. IPO enhance our visibility and credibility with our customer, with our vendors, with our banks. So that is the main reason. And financial flow also we want to improve for the production of our goods to channelize our proper channel. Got it. और आप कैसे प्लान कर रहे हैं टू डिप्लॉय दिस आईपीओ प्रोसीड्स? कौन से एरियाज हैं? वर्किंग कैपिटल है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, टेक्नोलॉजी है, ग्रोथ इनिशिएटिव्स भी हो सकते हैं, जो कि इनमें से कौन से पार्ट्स होंगे जो इमीडिएट इफेक्ट देखेंगे? इमीडिएट इफेक्ट करने वाली इसमें चीज़ है, इसमें वी विल यूज फॉर द कैपिटल for more than 70% in EPW for the our this one working capital only, and remaining we are planning to open our store in Telangana only, in Hyderabad specifically, and around 7 to 8 stores also we are going to start. That's good to hear, sir. Yeah. Now आप जानते हैं once listed expectations change हो जाती है stakeholders से। तो EPW कैसे प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को इस ट्रांजिशन के लिए, फ्रॉम बीइंग अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी टू अ पब्लिकली लिस्टेड वन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी? या गुड क्वेश्चन. इसके लिए हमने काफ़ी तैयारी की हुई है. जस्ट वी आर प्लानिंग टू इन हाउस अवर CA and CS also for the governance and for the compliances. We are working on that. So especially we have a team with our accounts and our auditor teams also working on this. So as soon as early we will finalize for the CA and CS in house. गॉट इट। और क्योंकि हम एक नए पड़ाव पे जा रहे हैं, लुकिंग अहेड 5 to 7 years, लॉन्ग टर्म विजन क्या रहेगा EPW इंडिया के लिए? Looking forward, अभी हम देख रहे हैं, just we are planning to enhance our capacity to refurb all the equipments. So after the 2 or 3 years, ये हमारा प्लान है. Just we are planning for the main board IPO के लिए अभी right now हमारा ये प्लान है just. ठीक है सर। और इसी के साथ हाउ डू यू सी द कंपनी इवॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ फोर मेजर पिलर्स: स्केल, रेवेन्यू प्रोफाइल, operational capabilities, and most importantly,
company's role in India's circular economy? इसके लिए मैं अपने टीम को बताता हूँ कि जैसे इसमें अकाउंट्स टीम का इन्वॉल्वमेंट है एंड प्रोडक्शन मैनेजर्स है इसके अंदर एंड वी हैव गुड सेल्स टीम आल्सो सो ऑल these are key players in our company so initially we are working on to enhance our capacity also to add on our uh, refurbishment unit for with the technical team also we will add in future. Okay, sir. And finally, who are the key leaders and teams working with you to execute this grand vision? How do you ensure कि strategy teams में, on-ground execution teams में alignment रहे? जी इसके लिए मोस्ट ऑफ द पिलर्स इसमें है हमारा सेल्स टीम अकाउंट्स टीम एंड द फैब्रिकेशन टीम जो कि क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट है इन सब का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इस टीम पे एंड ग्राउंड पे जो आपको सेल्स का सपोर्ट देता है. Got it. Okay. And last but not the least, आप अपने investors और stakeholders को क्या कहना चाहेंगे who are tracking EPW's journey, as it enters the next phase as a listed company? इन्वेस्टर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग इन ईपीडब्ल्यू. सो मैं हम ये जो देख रहे हैं अभी काफ़ी टाइम से जो लोग हमको जानते भी हैं फ्रॉम 2008 टू 2025 एज वी हैव बीन डूइंग द गुड बिजनेस एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर द आईपीओ. सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि लॉन्ग टर्म हमारे साथ बने रहिए. दैट विल बी द गुड फॉर ईपीडब्ल्यू एंड अवर इन्वेस्टर ऑल्सो. Sounds like a plan. Thank you for joining us, Mr. Yousuf, and all the very best for the थैंक यू. future. And thank you also to our viewers for tuning in. If you like the video, don't forget to hit the like button and subscribe to Small Cap Spotlight for more such insights.